After Mount Everest, you tried to climb Annapurna, which is the most difficult mountain to climb in the whole world, more difficult than Everest. And it is the 10th highest mountain in the world. जी. The death rate on that mountain is 34%, and only 250 people have reached to the top and come back down. Everest से पेट नहीं भरा आपका कि क्या? Why? हाँ दिल और that too you tried without oxygen? बताओ भाई इसके बारे में आपने कुछ क्या पूछना वो समझ में नहीं आ रहा पूछने रहा but what was that whole thing? Especially why you thought of going without oxygen? In the physical world, no matter how much we do, how much we achieve, there is always something more that this human being strives. Because the ultimate goal that he is seeking, he thinks that he will find it through climbing mountains or doing business or doing marriage or whatever. So मैंने एवरेस्ट के बाद जो मैंने आपको इसके पहले कहानी बताई जो रियलाइजेशन की वो इमीडिएट नहीं हुआ. आफ्टर आई केम बैक फ्रॉम एवरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज मोर लॉस्ट देन आई एवर वॉज. बिकॉज ये जो इल्यूजन था पहाड़ का वो टूट गया. अब क्या करूँ? और 15 साल की उम्र से पहाड़ी चढ़ रहा हूँ तो वही आता है और करूँ भी क्या? कुछ तो एक्टिविटी करनी है वर्ल्ड में, लाइफ में. तो मैंने सोचा कि ये जो खालीपन मेरे अंदर है वो दूसरा पहाड़ चढ़ के शायद मैं भर पाऊँ जो और मुश्किल है एंड जो और डेंजरस है. एंड टू मेक इट इवन मोर डेंजरस, let's climb it without the use of supplementary oxygen. Just to give you a context, what do I mean by that? 100 में से maybe 2 or 3 people are fit enough or strong enough or qualified enough to attempt such a feat. मैंने तैयारी भी की एंड कहीं ना कहीं मैं तैयार भी था physically I am 100% sure I would have been able to do it. I went to Annapurna. It was not a success. I got a stomach infection. Even after getting stomach infection, I continued for 3 days and high altitude में बहुत life मुश्किल होती है. But there came a point, I think at 6,700 meters के आसपास, between Camp 3 and Camp 4, I was so slow that I knew that 100% I would be able to make it to the summit. But जब मैंने अपने आप को ये सवाल पूछा कि क्या मुझ में नीचे आने की भी 100% ताकत बचेगी, तो उसका जवाब मेरे मन में नहीं था. And I've seen so many people die in the mountains in front of me, नीचे आते हुए, कि जब भी मेरे लाइफ में ये क्रॉस रोड आता है पहाड़ में, 75% of my expeditions have failed by the way because I chose safety over success, है ना. तो जब ये क्वेश्चन मैंने वहाँ पे अपने आप को पूछा कि how far am I willing to push myself and how far am I willing to go in order to break a promise that I have made to my parents. Before going on every expedition हम लोग, मम्मी कहाँ पे, हाँ हम लोग रात को घर पे बैठते over a whiskey and we talk about you know just, and हर बार हम ये बात करते हैं कि शायद ना आ पाऊँ तो just you know एक बात होती है ये in one of these nights एक चीज़ कही थी कि आपके शरीर को मैं आग लगाऊंगा. whenever it is you know, उल्टा नहीं होना चाहिए कभी because it's not a natural way of life. Unfortunately बहुत लोगों के साथ होता है. But if you have a choice to make a decision where you can avoid breaking that promise, so that's what I thought up there कि नहीं ये promise तो मुझे तोड़ना नहीं है. And I came back down. You have to understand when you abandon a 8,000 meter high expedition, these expeditions they cost a lot of money. 25 to 30 lakh rupees का investment हो जाता है इसमें. And I spent 2 years of my life single pointedly focusing on the preparation for Annapurna, and I was just 1.5 days away from the summit. But I think what Annapurna taught me, Everest never could. When you fail in life, when you turn around from what you wanting to achieve so badly, जब वो फटका पड़ता है ना तब अलग तरीके की जागृति आती है आप में. And I think I made it back down safely and this is my success कि मैं वापस आ गया नीचे.